Hi friends, welcome to my channel and welcome to yet another video in the history of English literature series that we have started recently. Till now we have covered 3 videos. So today we will discuss about the 15th century and also known as Barren Age. It was a period of unrest, totally unrest in Europe. ये स्टार्ट हुआ था फ्रॉम डेथ ऑफ चौसर टू टोटल miscellany. इसका मतलब होता है टोटल मीन्स ही वॉज अ पब्लिशर और इनका फुल नेम था टोटल रिचर्ड एंड miscellany मीन्स मिसलेनियस. ये एक कलेक्शन था सॉन्ग्स एंड सोनेट्स का. और इस एज में हमें पास्टन लेटर्स के बारे में भी जानने को मिलता है. द पास्टन लेटर्स इज़ अ रिमार्केबल कलेक्शन ऑफ लेटर्स सर्वाइविंग फ्रॉम द 15th to the 17th century between different members of Paston family, their staff and their friends, and about 1,000 letters and documents including will and even shopping bills. और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे some prominent writers of that age. So we already know that it was a period of unrest. And the 100 years that followed Chaucer that the most barren in English literature. And this was an era of Chaucer's imitator who show little originality. मतलब उस टाइम पे कोई भी ऐसा राइटर नहीं था या पोइटर नहीं था जो चौसर जैसा लिख सके. बस उसके इमिटेटर थे, वो भी कुछ अच्छा इमिटेशन करके नहीं लिख पा रहे थे. और उस टाइम पे लिटरेचर की ग्रोथ बिल्कुल कम थी और कॉमर्स और इंडस्ट्री में फिर भी ग्रोथ हो रही थी. अब हम जानेंगे कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट एज. तो सबसे पहले वी ऑलरेडी नो दैट कि ये पीरियड था टोटली अनरेस्ट का एंड बैरन इन इंग्लिश लैंग्वेज. तो W.H. Hudson call it a long barren period. No talented poet who could rank with Chaucer. Chaucer was the representative poet of this age. And there was no freshness, no originality in the poetry of this period. And उस टाइम पे टैलेंट की बहुत ज़्यादा कमी थी क्योंकि इमिटेटर ही बहुत सारे भरे हुए थे. खुद का वर्क किसी ने भी नहीं लिखा और जो चौसर के इमिटेटर थे वो कुछ चीज़ों को ही इमिटेट कर पाते थे पर वो म्यूज़िक और आर्ट को इमिटेट नहीं कर पाए. तो उस टाइम पे बिल्कुल भी फ्रेशनेस नहीं थी पोइट्री में. The efficiency of poetic understanding. So Chaucer's followers failed to understand his sure and accurate verification and made a mess of his metrical art. Disappearance of inflection. Inflection means change in a word. Word में कुछ change होना inflection माना जाता है. So the inflection E and other inflection created a problem. When the final E had become entirely mute, Chaucer's line badly read and transcribed and later badly printed. No free movement of thought. So the freedom of thought and the expression was hampered during this period. Poor state of education. उस टाइम पे एजुकेशन की जो स्टेट थी वो बिल्कुल ही पुअर थी. The state of education was also responsible for hampering the free movement of thought. And they had become the centers of endless and useless controversies over the dry abstraction of medieval philosophy. तो एजुकेशन तो बिल्कुल ही पुअर थी और वुमेन के लिए तो कोई एजुकेशन थी नहीं उस टाइम पे. एंड लास्ट इज पॉलिटिकल चेंजेस. The political conflict had a harmful effect on art and literature. The post-Chaucerian period was in the grip of wars, lawlessness, unrest and chaos. हर जगह chaos ही फैला हुआ था. But the 30-year struggle for power between the houses of York and Lancasters, known as the War of Rose. War of Rose के ऊपर एक बुक भी लिखी हुई है जिसमें इन सब का डिस्क्रिप्शन दिया गया है और इस टाइम पे आके इस वॉर का एंड हो गया था. देन आफ्टर द एंड ऑफ वॉर एज स्टार्ट हुई प्रिपरेशन की. सो द 15th century was the seed time for the germination of literature of high order in times to come. The introduction of the press by Caxton in 1476 was a historical event which made it possible for a book or an idea to reach the whole nation. तो उस टाइम पे जो प्रिंटिंग प्रेस को कैक्सटन ने निकाला था वो सबसे अच्छी चीज़ थी क्योंकि उससे पहले हाथों से ही टाइपिंग की जाती थी. एक बुक पब्लिश करने में बहुत टाइम लगता था बट प्रिंटिंग प्रेस के बाद बहुत ईजी हो गया लोगों तक हर चीज़ पहुंचाना. तो ये एक बेस्ट अचीवमेंट थी उस टाइम की.
एंड उस टाइम पे बहुत चीज़ें हुई थी. स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज़ वर एस्टेब्लिश इन अ प्लेस ऑफ मोनेस्ट्रीज. एंड what the 15th century contributed drama ballads is enough to show that it can be called the seeding time of English literature. तो उसके बाद टाइम शुरू हुआ चौसर डेथ टू रेनेसा. सो अब हम बात करेंगे उस टाइम के कुछ प्रोमिनेंट राइटर्स के बारे में और उनकी पोइट्रीज़ के बारे में. उस टाइम पे 2 तरह की पोइट्रीज़ थी, इंग्लिश चौसरियन एंड स्कॉटिश चौसरियन. तो सबसे पहले हम फर्स्ट राइटर की बात करेंगे जिनका नाम था थॉमस ऑक्लेव. हिज प्रिंसिपल वर्क इंक्लूड द रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस रिटन फॉर द एडिफिकेशन ऑफ हेनरी फिफ्थ. And the second work, The Complaint of Our Lady, and third is Oclave's Complaint, and last is Murder of God. There is no originality in his poetry. He appeared to be dull and uninspired imitator of Chaucer. तो उनकी राइटिंग से कोई भी ज़्यादा खुश नहीं था. सेकंड राइटर थे जॉन लाइडगेट. उनके भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स थे. द स्टोरी ऑफ थीव्स, सस्पोज्ड एडिशन टू कैंटरबरी टेल्स, एंड सेकंड इज द ट्रॉय बुक, फॉल्स ऑफ प्रिंसेस, लंडन लॉक पेनी. इनके वर्क्स भी कुछ ज़्यादा ओरिजिनलिटी वाले नहीं थे. ही वॉज नॉट ए स्किल्ड metrist. His poetry has none of the poetic grace of Chaucer. He shares the common vices of the time. So the third poet is Stephen Hawes, and he had an aptitude for allegory. As an imitator of Chaucer, he was highly influenced by the French aspect of his master genius, and he followed the author of the Roman of the Rose rather than that of the Canterbury Tales. और उसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क है द पास टाइम ऑफ प्लेजर, द एग्जाम्पल ऑफ वर्च्यू, द कन्वर्जन ऑफ वेरर्स, एंड हिज ओनली रिडीमिंग फीचर इज दैट हिज पास टाइम ऑफ प्लेजर इन्फ्लुएंस स्पेंसर. द जॉन स्केल्टन, he is a moralist with the message for his generation. He attacked the abuses of the church and the court. He appeared at his best in satire. His some prominent works are The Book of Colin Cloud. His satirical poem like Why Come Yet Not to Court are usually sharp, often witty, and nearly always alive. And some other important work like The Turning and Book of Philip Sparrow. अब हम बात करेंगे स्कॉटिश चौसरियन के बारे में. So the best poetry of the 15th century was written in Scotland. The Scottish poetry is the characterized by the love of wild nature for its own sake. And Chaucer's influence was clearly marked in that poetry. And the first poet of that time is James I. His famous work King Quire is an allegoric romance which reveals the influence of Chaucer's Roman de la Rose and Troilus and Cressida. Among the best of poems that appear between the periods of Chaucer and Spenser was written by James I. And the second poet is Robert Henryson. Henryson's The Testament of Cressida is continuation of Chaucer's Troilus and Cressida, and it has a fine tragic conclusion. His other famous work are The Testament of Cressida, Robin and Mackie, Garment of Good Ladies, Orpheus and Eurydice has some passages of real pathos. He is a typical poet of Scottish soil, and of all the Scottish poets of this time, Henderson has most rustic realism and saviors most of the soil. अब हम बात करेंगे विलियम डनबर के बारे में. He is considered to be the chief of the Scottish Chaucerian poets. And some prominent works are The Thistle and the Rose, Dance of Seven Deadly Sins, and Golden Turds. And the fourth poet was Douglas. His some prominent works are The Palace of Honor and Conscience. Conscience is a short poem that is without any poetical merit. And the last poet was Sir David. He was the last of Scottish poet of 15th century. He had no poetical gifts but had a strong sense of humor. The Dream is written in rhyme, royal stanza, and has the usual allegorical setting. तो ये उस टाइम के लास्ट पोइट माने जाते हैं. सो अब बात करेंगे हम इस एज के कुछ प्रोमिनेंट राइटर्स जिन्होंने प्रोज लिखे हैं. तो सबसे पहले जिन्होंने प्रोज लिखना स्टार्ट किया था वो थे पिकॉक, एंड ही एक्सप्रेस हिज आइडियाज इन इंग्लिश इंस्टेड ऑफ लैटिन, and his famous works include Repressure of Overmuch Blaming of the Clergy and the Book of the Faith. These two works are the landmark in the history of English prose.
Sir John was a lawyer by profession. He wrote mainly in Latin, and his English works, The Difference Between an Absolute and Limited Monarchy, are remarkable for clear, easy, straightforward, and simple style. And next writer was William Caxton. He was the first to establish printing press in England. He printed almost every work of real quality known in his day, including those of Chaucer. Caxton made and printed 24 translations from French, Dutch, Latin. So the Paston letters was correspondence of the Paston family, एंड इट इज़ सर थॉमस मैलोरी, जिन्होंने बस एक ही अपना प्रोज में कुछ लिखा था वर्क, जो पब्लिश किया था विलियम कैक्सटन ने. तो द पास्टन लेटर्स वाज कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ द पास्टन फैमिली एंड इट इज़ ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट टू द स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर. पास्टन लेटर्स उस टाइम पे जो इंग्लैंड में चल रहा था उस टाइम का एक प्रूफ है. पास्टन लेटर में उस टाइम में जो भी कुछ चल रहा था, पास्टन लेटर्स में सब कुछ वो लिखा हुआ है.